Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new video of Cambridge IELTS, and this is a video about the Cambridge IELTS reading. In this video we are going to discuss about the IELTS reading list of headings, that how we can solve the IELTS reading list of headings in a very easy way. So let's start our today's video. Whenever you sit to solve the IELTS reading list of heading test, you have to read the title of the passage first. Because when you will read the title of the passage first, you will get some idea about the text which is discussed later on. And the other thing is that you have to read very carefully each and every heading in the list. Try to mark the keywords of each heading in the list. For example, if there is a time mentioned in any heading, so you have to keep in mind that this heading will match with a paragraph in which there are the words like centuries, decades, years, months, weeks, days, or even seasons. Because the word time referred to these words. So that paragraph will match with a heading in which time is mentioned. If there is a heading, you read the word area or region in any heading, then that heading will match with a paragraph in which the name of any area, place, or even country is mentioned. So you have to keep in mind that the word region will not be in the paragraph, but there will be the name of any region like country, area, place, or any town. And for example, if there is a heading like Yorkshire's declining air quality, so you have to think that how the air quality can decline. The air quality can decline by the pollution, carbon dioxide, or you can say CO2. And the other thing you have to keep in mind that the area named Yorkshire should be mentioned into a paragraph. So you have to find a paragraph in which the Yorkshire area is mentioned. And the other thing is that for declining air quality, there will be the words like pollution, CO2, or carbon dioxide. So you will very easily match the right heading with the right paragraph. So it means that you have to read the headings very carefully into the list. Try to mark the keywords in each heading into the list and think or imagine the synonyms of those keywords. When you will get a grip on marking the keywords and imagining the synonyms of those keywords, you will try to find those keywords or synonyms into the paragraphs, and you will very easily match the right heading with the right paragraph. And you can do all this by doing a lot of practice and getting a good grip on the synonyms. So let's try to solve our today's test. And you have to watch the full video. Try to understand that how am I doing this part of the IELTS reading test and matching the right heading with the right paragraph. So let's start our today's video. Our today's reading passage is force Rhubarb. And first of all, we have to know the meaning of the force Rhubarb. So as you can see, Rhubarb has large fan-shaped leaves and long green edible stalks. कि rhubarb बड़े पंखे की शक्ल के पत्ते रखती है and long green edible stalks और लंबे सब्ज खाने के काबिल तने रखती है, which are commonly cooked with sugar, जिनको शुगर के साथ पकाया जाता है to make peas and other desserts, peas और दूसरे मीठे खाने बनाने के लिए. One type of rhubarb is ground in the dark to produce longer, rosier stalks and is called force rhubarb. So it means rhubarb is a kind of vegetable that is used to eat with peas and other desserts. So on the other page we have a list of headings
And first of all, we have to understand the headings in the list, and we have to uh, mark the keywords in the list of headings, because without marking the keywords it is not possible to solve this part of the IELTS reading test. So first heading is the extra time is worth it. So in this heading, the time is the keyword. The extra time is worth it के इजाफी वक़्त की अहमियत है. So this heading will match with a paragraph in which the words like centuries, decades, years, weeks, days, or the name of seasons are given. In any paragraph in which centuries, decades, years, weeks, days, or the name of seasons are given, then that paragraph will match with the heading number 1. We have to keep in mind these synonyms of the word time. Number 2. The preferred rhubarb for consumers. कि सबसे मौजू रूबर्ब सार्फिन के लिए, यानी सार्फिन के लिए सबसे मौजू रूबर्ब कौन सी है. So in this heading we have to keep in mind the two things. First of all, we have to find the kind of रूबर्ब, यानी कि सबसे मौजू जो है वो रूबर्ब की किस्म कौन सी है. ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें रूबर्ब की कोई ख़ास किस्म जो है ना, जो कि सबसे ज़्यादा मौजू है, उसका ज़िक्र होगा. और दूसरी चीज़ जो है वो हमने ये देखनी है कि उस पैराग्राफ में कंज्यूमर्स के सिनोनिम्स भी होने चाहिए, यानी कि कंज्यूमर्स मीन्स सार्फिन. सो इट मीन्स द सिनोनिम्स ऑफ द कंज्यूमर्स में बी यूजर्स or related to the users, like the designations of the people or the groups of people. So these are the synonyms of the consumers. Consumers means users, are the designations of the people, or the group of people. Heading number 3. Yorkshire's declining air quality. Yorkshire की जो फ़ज़ाई मयार है उसका ज़वाल, यानी कि डिक्लाइनिंग एयर क्वालिटी मीन्स कि ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें पोल्यूशन का जिक्र होगा या फिर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र होगा. कि हर वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 3 के साथ मैच करेगा जिसमें पोल्यूशन का जिक्र है या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है. और दूसरी चीज़ हमने ये भी ज़हन में रखनी है कि उस पैराग्राफ में योर्कशायर का भी जिक्र हो हर हालत में. तो फिर हेडिंग नंबर 3 उस पैराग्राफ के साथ मैच कर जाएगी. नंबर 4. ऑब्जर्विंग द सिलेक्शन प्रोसेस. ऑब्जर्व मीन्स मुशाहिदा करना, यानी कि ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में किसी बंदे का हवाला दिया गया होगा कि उस बंदे ने कुछ ऑब्जर्व किया है, मुशाहिदा किया है. अब जो जिस चीज़ का उन्होंने मुशाहिदा किया है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इंतखाब के मरहले का मुशाहिदा करना. तो उस बंदे ने सिलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया होगा. अब सिलेक्शन का जो हम मानी है वो क्या है, चूज या पिक, यानी पिक और चूज का मतलब है मुंतखब करना, सिलेक्शन का भी मतलब क्या है, मुंतखब करना. तो हमने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हेडिंग नंबर 4 उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में किसी बंदे का हवाला दिया गया कि उसने सिलेक्शन प्रोसेस का क्या किया है, मुशाहिदा किया है, उसको देखा है. और सिलेक्शन के लिए उस पैराग्राफ में जो वर्ड्स हो सकते हैं वो चूज हो सकता है या फिर पिक हो सकता है. नंबर 5. सजेस्टिंग अ पॉसिबल बिगनिंग. सजेस्टिंग मीन्स तजवीज़ पेश करना, अ पॉसिबल एक मुमकिन बिगनिंग शुरुआत. तो चूंकि ये जो
पैसेज है, ये एक सब्जी के बारे में है जिसका नाम फोर्स रूबर्ब है। तो ये जो हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में ये बयान किया गया होगा कि जो रूबर्ब है इसका इसकी काश्त का आगाज कब हुआ है। पॉसिबल मीन्स मुमकिना, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, यानी कि मुमकिना शुरुआत के बारे में तजवीज़ पेश करना कि कोई पैराग्राफ है जिसमें यह बयान किया गया होगा कि रुबर्ब की फसल सबसे पहले कैसे उगी या उसको कैसे उगाया गया। नंबर 6, अ लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली बिजनेस। तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, फैमिली बिजनेस, यानी कि खानदानी कारोबार। ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच कर सकती है जिस पैराग्राफ में ये बयान किया गया हो कि कोई काम है जो कि किसी बंदे ने शुरू किया है, फिर उसके बेटे ने शुरू किया है और फिर उसके बेटे के बेटे ने आगे उसको कंटिन्यू किया हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग है, यानी कि काफी पुराना फैमिली बिजनेस। तो लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए उसने नंबर ऑफ ईयर्स को शो किया हुआ होगा। सो लॉन्ग स्टैंडिंग मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स के उस बंदे का जो कारोबार है वो कितने अरसे का है, कितने सालों का है, और सालों को भी उसने मेंशन किया होगा। और दूसरी चीज क्या है कि फैमिली के बंधु का भी उसने जिक्र किया होगा कि किस किस बंदे ने ये कारोबार किया हुआ है। नंबर 7, द बेस्ट रीजन फॉर फोर्स रूबर्ब। रीजन मीन्स इलाका, यानी कि रूबर्ब के लिए सबसे बेहतरीन इलाका। तो इस हेडिंग नंबर 7 में रीजन के वर्ड जो है वो क्या है, कीवर्ड। अब जिस पैराग्राफ के साथ ये मैच करेगी हेडिंग नंबर 7, उस पैराग्राफ में लफ्ज रीजन तो नहीं होगा, लेकिन उसने उस रीजन का नाम लिखा होगा। वो कंट्री का नाम हो सकता है, वो किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी कस्बे का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। और उसने ये भी कहा होगा कि ये जो जगह है, ये जो इलाका है, ये जो मुल्क है, यहाँ पर जो रुबर्ब होती है वो सबसे ज्यादा क्या है, बेहतर है। सो let's try to match the headings with the appropriate paragraphs. So the first paragraph, A, in the north of England, a cold winter is good news for some. इंग्लैंड के शमाल में जो सर्दी का मौसम है ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है। And not just snowmen and woolly hat makers, ना सिर्फ स्नोमैन के लिए और ऊनी हैट मेकर्स के लिए। According to Yorkshire's farmer David Westwood, so David Westwood is the name of a farmer, यानी कि डेविड वेस्टवुड जो यॉर्कशायर का किसान था उसके मुताबिक दिस ईयर्स फोर्स रुबर्ब इज द बेस्ट फॉर ईयर्स, कि इस साल जो रुबर्ब की फसल हुई है वो सब सालों से क्या है, बेहतरीन है। तो अब जो ए सेक्शन की पहली हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं, इसमें हमने विंटर के बारे में पढ़ा है, और जो दूसरी लाइन में हमने ये पढ़ा है कि जो डेविड वेस्टवुड था उसने कहा है कि इस साल जो रुबर्ब की फसल हुई है वो सब सालों से बेहतर है। तो जो 3 लाइनें पढ़ी हैं इसके रिलेटेड जो है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग में कोई भी हेडिंग नहीं है, क्योंकि विंटर के बारे में कोई हेडिंग नहीं है, और इसके अलावा कोई ऐसी हेडिंग नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि इस साल जो फसल हुई है वो सबसे ज्यादा क्या है, बेहतर है। इसका मतलब है हमें पैराग्राफ को आगे और पढ़ना पड़ेगा। Westwood, a softly spoken Yorkshire man, should know. He has been growing and selling rhubarb for 62 years. यानी कि वो 62 सालों से रुबर्ब की फसल को उगा भी रहा है और बेच भी रहा है। So 62 years is a keyword. Since he started picking on the farm age 11, उसने 11 बरस की उम्र में रुबर्ब की फसल को पिक करना शुरू किया था फार्म में। His son Jonathan works on the farm too. उसका बेटा जोनाथन भी इस फार्म पर काम करता है। तो इसमें जो हमने की वर्ड्स वो मिले हैं वो ये है कि जो डेविड वेस्टवुड है वो 62 सालों से ये काम कर रहा है, यानी रुबर्ब को उगा भी रहा है और बेच रहा है। 11 बरस की उम्र में उसने फार्म में काम करना शुरू किया था और उसका बेटा भी फार्म में काम करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस। सो लेट्स ट्राई टू मैच the appropriate heading with paragraph A. And if we try to read the headings, the extra time is worth it? No. The preferred rhubarb for consumers?
No. Yorkshire is declining air quality. No. Observing the selection process. No. Suggesting a possible beginning. No. And heading number 6, a long standing family business, यानी काफी पुराना खानदानी कारोबार. सो लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए उसने जो नंबर ऑफ ईयर्स शो किए हैं वो क्या है? He has been growing and selling rhubarb for 62 years. कि वो 62 सालों से रुबर्ब को उगा भी रहा है और बेच भी रहा है. और फैमिली बिजनेस का जो हवाला है वो क्या है कि his son Jonathan works on the farm too. उसका बेटा जोनाथन भी इस फॉर्म पर काम करता है. तो इस तरह हम पैराग्राफ ए के लिए जो है वो हेडिंग नंबर जो है 6 मैच करेंगे. सो वी कैन क्रॉस द हेडिंग नंबर 6 इन द लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड वी कैन राइट रोमन 6 in front of question number 28. B paragraph. We meet at his farm a few miles from the city of Wakefield. So, city of Wakefield is a place. It's a region. हम उससे उसके फार्म में मिले और वो फार्म वेकफील्ड शहर से चंद माइल दूर था. Which with the cities of Bradford and Leeds. Bradford और Leeds भी places है या cities है. From the 3 points of Rhubarb triangle. The heart of the British Rhubarb industry. यानी कि सिटी ऑफ वेकफील्ड है वो बरतानवी रुबाब की जो फसल है ना उसका मरकज है. यानी यहाँ पर सबसे अच्छी जो है वो रुबाब हो सकती है. इट्स द हार्ट प्लेस. इट डज नॉट ग्रो एज वेल एनीवेयर एल्स. इससे अच्छी फसल किसी और जगह नहीं उगती. सो दिस इज अ की सेंटेंस. इंसिस्ट वेस्टवुड. वेस्टवुड इस बात की ताकीद करता है. He has a number of theories as to why this is. उसके ज़हन में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा है, इस जगह की तारीफ क्यों की है. The loam soil on a clay base is perfect for the roots or crowns. कि जो मट्टी है यहाँ की वो जड़ों और तनों के लिए बहुत ही मौजूद है. Which rhubarb grows from. जहाँ से रुबर्ब उगती है. So after reading the 3 or 4 lines, we came to the conclusion that this paragraph refers to an area that is best for the rhubarb. So let's try to match the headings from the list. Extra time is worth it? No. The preferred rhubarb for consumers? No. Yorkshire is declining air quality? No. Observing the selection process? No. Suggesting a possible beginning? No. And heading number 7, the best region for force rhubarb. So we can cross the heading number 7 and we can write Roman 7 in front of question number 29. C section. Westwood's farm produces both the greenish outdoor rhubarb. कि वेस्टवुड के जो फॉर्म हैं वो दोनों ग्रीनिश जो है वो रुबर्ब को पैदा करते हैं. द काइंड दैट ग्रोज विद गार्डन्स ऑल ओवर द कंट्री. काइंड ये एक ऐसी किस्म है जो कि पूरे मुल्क के बागात में उगती है. एंड द स्टार्टलिंगली पिंक फोर्स रुबर्ब. और हैरानकुन हद तक ये बात कही जा सकती है कि वो कौन सी वाली है? पिंक फोर्स रुबर्ब है. सो पिंक फोर्स रुबर्ब इज अ काइंड ऑफ रुबर्ब. इट इज दिस. ये वो रुबर्ब है. मतलब क्या? ये पिंक फोर्स रुबर्ब रुबर्ब की वो किस्म है दैट इज द क्रीम ऑफ द क्रॉप. जो कि इस फसल में रुबर्ब की फसल में सबसे बेहतर है. क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन्स सबसे बेहतर है. द अपर क्लास ऑफ द रुबर्ब फैमिली. और रुबर्ब खानदान की जो फसलें हैं उनमें सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज है. अपर क्लास है यानी इसका दर्जा सबसे बेहतर है. सो इट मीन्स इट्स अ preferred rhubarb. And after reading the 3 lines we can say that we can match it with the heading number 2, the preferred rhubarb. So it matches with the preferred rhubarb. And now we have to find the consumers because the heading number 2 is the preferred rhubarb for consumers. We have to find the users
are the people or the group of people who love it, who like it. So now I have to find the users or the group of people or any designation related to the people. Yes, we have found. No wonder chefs and food writers have fallen in love with force rhubarb all over again. नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं है। शेफ्स मीन्स खाना पकाने वाले, फूड राइटर खुराक के बारे में लिखने वाले, हैव फॉलन इन लव, वो मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं, विद फोर्स रुबाब की फसल के साथ, ऑल ओवर अगेन, दोबारा से। सो इट मीन्स शेफ्स एंड फूड राइटर्स लाइक द पिंक फोर्स रुबाब। So it means that it will match with heading number 2, the preferred rhubarb for consumers. Preferred rhubarb is pink force rhubarb, and the reason is why it's preferred because the cream of the crop, ये इस फसलों में सबसे बेहतर फसल है। The upper class of the rhubarb family, rhubarb खानदान की जो फसलें हैं उनमें ये सबसे ऊंचे दर्जे पर फायज है, so it's preferred. And the consumers are given, chefs and food writers have fallen in love with force rhubarb all over again. So we can cross the heading number 2 and we can write Roman 2 in front of question number 30. Next is the D section. There are certainly simpler ways to grow food. खुराक उगाने के सादा से तरीके। First, सबसे पहले, the plant roots or crowns are grown outside for more than 2 years. यानी सबसे पहला मरहला ये है कि जो पौधे की जड़ें हैं और क्राउन्स या इसके तने हैं और ग्राउंड आउटसाइड, उनको बाहर उगाया जाता है फॉर मोर देन 2 years, 2 सालों से भी ज्यादा अरसे तक। So it is kind of time. 2 years means time. Then फिर at the start of their third winter, जब तीसरा मौसम सरमा उनकी जिंदगी का शुरू होता है, they are left in the ground until it is cold enough to break the crown's dormancy. तो जब तीसरा मौसम सरमा शुरू होता है तो फिर उनको जमीन पर छोड़ दिया जाता है यहाँ तक कि सर्दी इतनी पड़ती है कि उनके जो तने हैं उनसे कोंपलें फूट पड़े। So the word more than 2 years refers to the time, and the third winter also refers to the time. So we can say that the section D will match with the heading in which time is mentioned. And we know that the heading number 1 is the extra time is worth it. इजाफी वक़्त की अहमियत है. So now we have to understand the word extra. How is it? First, the plant roots or crowns are grown outside for more than 2 years. सबसे पहले जो पौधे की जड़ें और तने हैं उनको जमीन से बाहर 2 से ज्यादा सालों तक क्या किया जाता है, उगाया जाता है. It means 2 extra years are spent on this. Then फिर यानी कि 2 सालों के बाद at the start of their third winter, जब तीसरा मौसम सरमा शुरू होता है, they are left in the ground, उनको जमीन पर छोड़ दिया जाता है until it's cold enough to break the crown's dormancy. So it means that section D will match with the heading number 1 because time is mentioned, and heading number 1 is the extra time is worth it, क्योंकि उनको 2 सालों तक जो जड़ें हैं और जो तने हैं उनको जमीन पर छोड़ दिया जाता है, फिर आगे जो है वो प्रोसेस होता है फसल के उगाने का. So we can cross the heading number 1, extra time worth it, and we can write Roman 1 in front of question number 31. Next is the E section. In Westwood's 1920s rhubarb sheds, के 1920 की दवाई में वेस्टवुड में जो थे वो रूबर्ब के बड़े बड़े शेड थे. इट इज पिच ब्लैक, ये तारीक नजर आते थे. आई, so I refers
to the writer or any person. I slipped and slid on the narrow browse. मैं फिसला और घसीटता हुआ एक तंग सी नाली से गुजरा. That serve as path. वो नालियां जो थी रास्ते का काम देती थी. Between the beds of the rhubarb crowns. rhubarb के तनों की क्यारियों के दरमियान. So I is a key word. It means any person who observed all the process. It's a belief when a team, it's a relief. It's a relief when a team of pullers arrive. ये बहुत सुकून वाली बात थी जब एक पुलर्स की टीम वहां पर आई. पुलर्स मीन्स वो बंदे जो कि इस फसल को जमीन से उखाड़ने वाले थे, निकालने वाले थे. All local men, वो सारे के सारे मकामी लोग थे. Some of whom have been working for Westwood for 40 years. उनमें से कुछ जो थे वो वेस्टवुड के साथ 40 सालों तक काम कर रहे थे. Each carries a sturdy candle. हर एक बंदे के पास एक लालटेन थी. And their pale flickering light reveals a sea of yellow leaves. And their pale flickering light, और लालटेनों की जो जर्द टिमटमाती हुई जो रोशनी थी, reveals वो जाहिर करती थी a sea of yellow leaves, जर्द पत्तों के समंदर को, stretching 40 meters to the far wall, जो के पत्ते तकरीबन 40 मीटर तक दूर दीवार तक फैले हुए थे. The men walk the beds plucking. Plucking means उखाड़ना. वो मर्द जो थे वो उन क्यारियों के दरमियान चले, plucking उनको उखाड़ते रहे. The standing stems expertly, बड़े मायराना तरीके से तनों को. Choosing means selecting. Choosing only the ones, सिर्फ उन्हीं तनों को मुंतखब करते रहे. That have reached the length of an arm, जो तने उनके बाजू की लंबाई तक थे. So it means that this E section refers to a process and it is observed by someone because I is mentioned. And later on we have read that each carries a sturdy candle, कि हर एक बंदा जो था वो एक कैंडल उठाया हुआ था. And their pale flickering light reveals a sea of yellow leaves stretching 40 meters to the far wall. The men walk the beds plucking the standing stems expertly. वो जो आदमी थे जो कि फसल को उखाड़ने के लिए या ज़मीन से निकालने के लिए आए थे, वो जो थे बड़े मायराना तरीके से जो तनों को ज़मीन से उखाड़ रहे थे. Choosing only the one, वो सिर्फ उन तनों को मुंतखब कर रहे थे that have reached the length of an arm, जिनकी लंबाई तकरीबन एक बाजू के बराबर होती थी. So it's kind of observation. Someone observed the process of selection of the stems of the rhubarb. So we can say that heading number E will match with the paragraph E will match with the heading number 4, observing the selection process. So selection means choosing only the ones that have reached the length of an arm. So it's a selection process. And somebody has observed because I is mentioned. So we can cross the heading number 4 and we can write 4 in front of question number 32. Last paragraph. So how was the arcane cold dark heat process in use since Victorian times discovered? Westwood's story is appallingly earthy. A gardener threw an old crown onto the horse stable muck pile. एक माली ने एक पुराने तने को फेंका onto the horse stable muck pile, घोड़े के अस्तबल में गंदगी के ढेर पर. यानी कि एक माली ने घोड़े के अस्तबल में गंदगी के ढेर पर एक पुराने तने को फेंका. The manure was hot, वहां पड़ी जो खाद थी वो बहुत गर्म थी. And the plant was soon covered,
और जल्द ही एक पौधा जो था उस खाद से ढक गया, खाद जो थी उस पौधे के इर्द गिर्द फैल गई। द स्टेबल बॉय मस्ट हैव बीन पजल्ड, अस्तबल में काम करने वाला जो लड़का था वो परेशान हो गया। बाय द स्टार्टलिंग पिंक स्पेस, जब उसने हैरानकुन हद तक गुलाबी रंग की कोंपलों को देखा। दैट केम पुशिंग थ्रू द डर्ट, जो कि उस गंदगी के ढेर में से बाहर बड़े जोर शोर के साथ निकल रही थी। अ वीक और टू लेटर, एक या दो हफ्तों बाद। सो इट्स काइंड ऑफ बिगिनिंग, कि एक माली ने जो है वो एक पुराने तने को गंदगी के ढेर पर घोड़े के अस्तबल में फेंका। वहाँ पर पड़ी खाद बहुत ज़्यादा गर्म थी और जो था एंड द प्लांट वाज सून कवर्ड, और उस खाद से जल्द ही एक पौधा जो था वो ढक गया था, उसके इर्द गिर्द खाद लग गई थी। फिर जो स्टेबल बॉय था वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जब उसने गुलाबी रंग की कोंपलों को एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद उस गंदगी के ढेर में से बड़े जोरों शोर के साथ बाहर निकलते हुए देखा। So this paragraph F refers to the beginning of the Rhubarb. So we have already read a heading in the list, that is heading number 5, suggesting a possible beginning. So we can cross the heading number 5 and we can write Roman 5 in front of question number 33.